Today we have to study triangle of vector addition. The statement, first of all, let's see the statement. When two vectors represent two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order means the point where one vector ends, the next vector starts from that point. Then the third side represents the sum of the two vectors in magnitude and direction but taken in opposite order. हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स जब उन्हें एक ही ऑर्डर यानी एक ही डायरेक्शन में इस तरह से लिया गया हो, एक वेक्टर जहाँ एंड कर रहा है दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो रहा है, तो तीसरी साइड जो ट्रायंगल को क्लोज करती है वो उन दोनों का सम होती है. जैसे हम यहाँ वेक्टर बी और वेक्टर ए को ले लेते हैं. हमने क्या किया, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, देन ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को. आप देख सकते हैं वेक्टर बी स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर वेक्टर ए एंड्स. वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट वेक्टर बी के लिए इनिशियल पॉइंट का काम कर रहा है. नाउ ओ जहाँ से हमने इस ट्रायंगल को बनाना शुरू किया था और बी वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, इन दोनों को जो वेक्टर जोड़ता है वो हो गया दोनों का रिजल्टेंट. आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर अपोजिट है यानी इसका डायरेक्शन अपोजिट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. अगर हम इसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो वी कैन सी दैट वेक्टर आर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ कमिंग टू ये दो वेक्टर्स को ऐड करने की प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. अगर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें, सबसे पहले लेट अस टेक वेक्टर ए, magnitude of vector A as A and magnitude of vector B as B. This is represented by OA, this is represented by AB. Okay, now let's consider this triangle. अब हम इस triangle को consider कर रहे हैं. I'll form another triangle so that you can easily find out the magnitude. O A A B, this is vector B, this is vector A and this is vector R जो कि vector A plus vector B के equivalent है. The smaller angle between vector A and vector B be represented by theta and angle between sum of vectors and the initial vector by phi. यहाँ let us draw perpendicular from B on OA produced BM. Draw BM perpendicular to OA. BM हमने ड्रॉ कर लिया OA के perpendicular. Now in triangle ABM, in triangle ABM we can consider ABM. Let us consider what is sine theta. What is sine theta? Now sine theta is equal to BM by AB, which implies that अगर हम BM की वैल्यू को निकालना चाहें तो ये हो जाएगा AB sin theta. Now coming to same triangle, now the cos value of the angle theta. The cos theta is AM by AB. Can we write it as AM equals AB cos theta. AB हम देख सकते हैं AB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B को. दैट इज वी कैन राइट इट एज B cos theta and this one as B sin theta. Now coming to the next part, in triangle OBM, you can see we are taking the whole triangle OBM, हम पूरे triangle को ले रहे हैं. Now what is value of OB? What is value of OB? By Pythagoras theorem you can see that it is OM square plus BM square. Using Pythagoras theorem we have done it. Now coming to the next point, OB can be
considered as OM square. So OM is what? OA plus AM whole square plus BM. As you can see, we have found BM as B sin theta. हमने BM को B sin theta के फॉर्म में लिखा है. B square sin square theta will be its value. Now coming to OA plus AM, इनके वैल्यूज डालने पर भी हमें क्या मिलेगा? वो भी इक्वल टू OA. वी कैन सी इट इज OA रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को, दैट इज A प्लस AM रिप्रेजेंट कर रहा है B cos थीटा को, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ OB इज रिप्रेजेंटेड बाय R, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब आप इसे ओपन कर लीजिएगा. विल ओपन द ब्रैकेट, व्हाट यू विल फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos theta plus B square sin square theta. This whole comes under root. On solving this, what we are going to get, we will be getting R equals under root A square plus B square will be taken as common, cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. Now ultimately we get magnitude of A square plus magnitude of B square plus twice magnitude of A to B into cos theta. This is the magnitude of the resultant of the two vectors in case of addition of vectors. This is magnitude of sum of the two vectors. Now the direction of vector R, direction of vector R. Now direction of the sum of the two vectors. For this you just have to find tan of the angle between sum of the vectors and the initial vectors, that is equal to BM by OM. Simply find it. What is value of BM? BM was B sin theta. What is value of OM? OM OA, that is magnitude of vector A, plus AM, that is B cos theta. This will give you the direction of the resultant vector. For this, अगर हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, हमें फाई की वैल्यू नहीं पता है, देन फॉर गेटिंग फाई आप कर सकते हो फाई इक्वल्स tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. Now considering some cases related to some cases. Now case 1, what happens when theta equal to 0 degree, that is vector A and vector B are in same direction, direction. Now it is, let us find out the magnitude first. R equals under root A square plus B square plus 2AB cos theta. So that will be cos 0 degree. So simply A square plus B square plus 2AB, that is equal to under root A plus B whole square, which is equal to A plus B. Now case 2, यानी दोनों का सम हो जाएगा सिंपल when both the vectors are in same direction. It can be like this, vector A and vector B. The smaller angle between them is 0. Now considering case 2, when theta is equal to 90 degree, let us find out R. R equals under root A square plus B square plus 2AB cos 90 degree. Value of cos 90 is 0. So this whole becomes 0. What we will get? We will get R as A square plus B square. That is same. This is vector A and vector B. As I told you, it is aligned perpendicular to each other. Now this is vector R.
This is the angle theta 90. Here also we'll get 90 only. So it is similar to right angle triangle. That value of hypotenuse gives you the magnitude of vector r. Now, one more case, let us consider case 3. What happens when theta is equal to 180 degree? That is, vector A and vector B are in opposite directions. Are in opposite directions. Let this be vector A and this one be vector B. In this case, r equals a square plus b square plus 2ab cos 180 degree. What is value of cos 180? Cos 180 is -1. It becomes a square plus b square minus 2ab. That is equal to a minus b whole square. So r will be a minus b. So here the sum is the difference of the two vectors when they are in opposite direction. So we'll be discussing the next laws in the next class. Thank you.